So, hello, a very good evening to all, and welcome to the class. Yeah, so I hope my voice is audible. So, quickly, I'm launching one poll. Please, all of you need to fill this form, right? सभी लोग इस फीडबैक फॉर्म को फटाफट फिल करेंगे रिलेटेड टू माय वॉइस, माय स्क्रीन विजिबिलिटी एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है? चलो, नाउ क्विकली फिल दिस पोल, फटाफट फिल करो. राइट. गुड गुड, वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे क्लास. ओके, चलो. So in last class, basically we study about group 16th and group 15th of the periodic table, right? So in this class, we are going to cover group 17 and group 18. As we all know, from P block, only general properties and general trends are coming in the syllabus, right? So there is no particular chemical reactions like properties of compounds of fluorine or chlorine. So these are not included in the syllabus, right? So P block is very small chapter now because lots of topics were already deleted. So only all we need to study about the जनरल ट्रेंड्स देयर जनरल प्रॉपर्टीज एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है? तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है हम लोगों के लिए अभी, ग्रुप 17 एलिमेंट एंड 16th एलिमेंट. वी ऑलरेडी कवर्ड ग्रुप 15th एंड ग्रुप 16, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन बेटा. नाउ, सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स. सो बेसिकली व्हाट आर द ग्रुप 17 एलिमेंट्स? ग्रुप 17 एलिमेंट्स आप किसको बोलोगे, राइट? सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन are called 17th group element. So these are the important element of group 17, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene. Acetylines are basically radioactive, so already study fluorine, chlorine, bromine, iodine properties in detail. Clear hai? Now, the first element of this group is nothing but fluorine. Similarly, second element of this group is chlorine, third is bromine, fourth is iodine, and the next is acetylene, right? Now, uh, these elements are collectively called as halogens, right? So group 17 elements are also known as halogen group. ठीक है? बहुत जगह आपने स्टडी किया होगा inorganic as well कि these elements are collectively called as halogens. तो इसको हम लोग halogens के नाम से भी जानते हैं, right? Now, why they are called halogens? Halo means salt and gens means producer, right? So in Greek, halo means क्या होता है? Salt, and gens means producer, that is salt producer. So they are called halogens because they are known as salt producer. तो ये salt को produce करने वाले नाम से जाने जाते हैं, salt producer. That's why they are called halogens. Clear है? अब देखो, द हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स. यानी जो हैलोजेंस होते हैं, द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स. तो ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं. सो दीज हैलोजेंस आर द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स. दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर बेटा, ठीक है? नाउ, अब देखो, दिस इज द पीरियोडिक टेबल वी हैव, right? So in this, that is the fluorine group is called 17th group, ठीक है? Second last element. So we can say that the fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene commonly known as halogens. Now, let's see some important properties of this element. For example, fluorine, they are pale yellow in color, right? So they are liquid and form pale yellow colors. Okay. Similarly, if we talk about chlorine, so this is also pale yellowish green. So this color you need to remember, ठीक है? आपको ये कलर्स के नाम जो है वो याद होने चाहिए, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इनको कलर्स को लेके भी. सो यू मस्ट अवेयर अबाउट द
कलर. सो क्लोरीन का कलर क्या है? पेल येलोइश ग्रीन. सिमिलरली वी हैव bromine. So the color of bromine is like that. That is reddish brown liquid. So this is reddish brown liquid. तो reddish brown liquid color का होता है. और आयोडीन जो होता है वो डार्क ब्लैक वॉयलेट सॉलिड. तो ऊपर के जो दे फ्लोरीन क्लोरीन दे नॉर्मली दे फाउंड इन अ गैसियस फेज. वो किस फेज में होते हैं? गैसियस फेज में होते हैं. बाकी जो अपना था दैट इज ब्रोमीन, वो लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. तो ये एक ऐसा ग्रुप है बेटा जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म अवेलेबल होते हैं. सो आयोडीन को देखो वॉयलेट वेपर के फॉर्म में भी इस तरीके से प्रेजेंट होता है. नाउ एस्टेटाइन है ये, जो कि ब्लैक सॉलिड होता है. एंड दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो रिमेंबर, इसकी प्रॉपर्टीज को हम ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती है. So we already always study about the non-radioactive elements like from fluorine to bromine. वहां तक हम लोग स्टडी को करने वाले हैं. ठीक है, चलिए बेटा. नाउ अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, जल्दी से बताना सभी कि अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड. सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स को किस नाम से जानते हैं? यस बेटा, एवरीवन फटाफट आंसर्स करो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक. तो एक बेसिक क्वेश्चन लिया है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड. 17th ग्रुप, 11th ग्रुप, 13th ग्रुप या जीरो ग्रुप? यस एवरीवन. JNV यनम ने ये बोला. JNV शिमोगा ऑल्सो सेड ये ए इज अ करेक्ट. ओके, ठीक है. सो दे बिलोंग टू द 17th ग्रुप. तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. सो 17th ग्रुप इज द करेक्ट आंसर. 17th ग्रुप जो है JNV भावनगर. ठीक है, गुड. तो 17th ग्रुप जो हो गया हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो गया. दैट्स गुड. चलो, अब ये क्वेश्चंस बताइए. द हलाइड लाइक NaCl, NaBr एंड NaI in large proportions occur in, right? So halide है like NaCl, they are also salt. NaBr, they are also salt. And NaI, they are also salt. In large proportion occurs in mineral water, sea water, river water या all of the above. यस बेटा. JNV शिमोगा ने बोला है डी. JNV यत्नम बोल रहे हैं सी वाटर ओनली. ओके, एनीवन एल्स? कोई और बच्चा? या JNV कुरनूल से है बी. रत्ना कुमारी ने भी क्या बोला है? बी. ठीक है. सो ज्यादातर बच्चों ने बी बोला है और कुछ बच्चों ने डी भी बोला है. दैट इज ऑल ऑफ द एबव. सो दे आर आस्किंग कि NaCl, NaBr, NaI दे आर अकर इन लार्ज प्रोपोर्शन. लार्ज प्रोपोर्शन पे ये कहाँ अकर होते हैं? सो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, लार्ज प्रोपोर्शन पे पूछा था. तो इन लार्ज प्रोपोर्शन दे आर अकर ओनली इन द सी वाटर, राइट? सो दे आर अकर इन द सी वाटर. So this is very important. The halide like NaCl, NaBr, NaI in large proportion occurs in only sea water. ठीक है, चलिए बेटा ये बताइए. एस्टेटाइन इज अ नेचुरल एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट, बोथ बी एंड सी? यस बेटा. सो क्या हो जाएंगे? दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट. और अभी अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने. ठीक है, चलो. So now let's see some occurrence of 17th group element कि these elements कौन कितने amount में occur करता है, कहाँ पाया जाता है, right? So this is very important to remember the occurrence of the 17th group element. So if we talk about the first element of this group, that is fluorine. So fluorine having atomic number 9 and atomic mass close to 19. So fluorine is the less abundant element. This point is very important to understand. Fluorine is less abundant element. ठीक है. Now, in the earth crust, it is about 0.07%. So in the earth crust, it is about only 0.07%. It occurs mainly as insoluble fluoride. तो ये कैसे अकर होता है? तो it's occur mainly as insoluble fluoride, such as fluorospar, that is calcium F2. So this is the structure of fluorospar beta, calcium fluoride.
ठीक है। so first point you need to remember, fluorine is very less abundant element, or in the earth crust it is about only 0.07%, and it occurs mainly as insoluble fluoride. So it occurs mainly as insoluble fluoride such as fluorospar, that is calcium fluoride, CaF2, and this is the structure of fluorospar. ठीक है, ये structure हो जाएगा फ्लूरोस्पार का, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। नाउ और कहाँ कहाँ एग्जिस्ट होता है, दैट इज इन क्रायोलाइट। सो क्रायोलाइट इज ऑल्सो वेयर फ्लोरीन कैन बी एग्जिस्ट, एंड दैट इज NaFAlF3, right? So we can say that cryolite. So this is the structure of cryolite. Now the next thing where fluorine can exist is fluoropatitite, right? So fluoropatitite, in this also fluorine can exist. तो याद रखना, फ्लोरोपेटाइट हो गया, and the cryolite हो गया, and the fluorospar, that is calcium fluoride. So these are the insoluble fluorides in which fluorine exists. Is this clear to everyone? ये तीनों को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, now in small quantity, it is also present in a soil and river water plants. So बहुत ही small quantity में it also present in a soil. कहाँ present होता है? Soil में. So in a small quantity, it is also present in soil and the river water plants. ठीक है, वहां पे भी ये present होता है. Bones and teeth of the animals. ठीक है. Now let's see about the chlorine, where chlorine occur, and in which ore we'll actually get the chlorine. Okay, so let's see. So chlorine mainly occurs as a sodium chloride solution, that is 2.5% by mass. यानी क्लोरीन मेनली कैसे अकर होता है? क्लोरीन मेनली अकर एज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, that is 2.5% by mass, and kernelite, that is KCl.MgCl2.6H2O. So chlorine mainly occur as sodium chloride solution and kernelite, that is KCl MgCl2 dot 6H2. Clear है? Now bromine, so as we already know, bromine is reddish brown liquid, and it is a fuming and red brown liquid at room temperature. ठीक है? Now it occurs as a colorless soluble crystalline mineral salt. कहाँ पे होता है ये? कैसे एग्जिस्ट कर रहा है बेटा ये? तो it exists as colorless soluble crystalline mineral salt, and due to solubility of bromide ion it occurs in ocean. कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये? ओशन में मिलता है. So due to the solubility of bromine ion it occurs in ocean. Now let's see about some important facts about the iodine. Certain forms of marine life contain iodine in their system. ठीक है? For example, various seaweeds contain up to 0.5% of iodine. ठीक है, 0.5% इसमें iodines होते हैं seaweeds में. Similarly, chili saltpeter, that is KNO3. Saltpeter किसको बोलते हैं? KNO3 contain up to 0.2% of sodium iodate. ठीक है. Now let's talk about estrogen. So it is not a halogen, so it is a radioactive element that occurs on the earth only as the result of the radioactive decay of the certain heavy element, and the half life period is very small. It is only 30 seconds. So their half life time is very very small, only 30 seconds. For the 30 second only they are existing. ठीक है, so their half life is very small. So it is not the halogen, so not need to remember anything about the estetine. इसके लिए कुछ याद रखने का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर दैट इज फ्लूरिन कौन कौन से ओर से मिलता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट? कि कहाँ कहाँ से ये मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, क्या परसेंटेज है. सो दीज थिंग यू ओनली नीड टू रिमेंबर. चलो, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द फॉर्मूला ऑफ कर्नलाइट इज, कर्नलाइट का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से बताइए बेटा, कर्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्नेलाइट?
यस गो अहेड। बी बी। ठीक है, बच्चों ने बी बोला है। जेएनवी कुरनूल, जेएनवी यनम। ठीक है। गुड गुड। और किसने बोला है? चलो, गुड बेटा, वेरी गुड। तो सबने लगभग इसी में आंसर दिया है, बी ऑप्शन में ही। तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो। द परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन सी विट्स, कितना बताया था आयोडीन का परसेंटेज सी विट्स में? जल्दी बताइए बेटा। डी डी डी, गुड गुड। ठीक है। डन। 0.5%। चलो, ये बताइए बेटा। चिली सॉल्ट पीटर इज अ गुड सोर्स ऑफ इससे क्या मिलता है? चिली सॉल्ट पीटर। गुड गुड। ए, जेएनवी कोकराझार सेड ए, जेएनवी कुर्नूल ए, जेएनवी वारंगल ए। ओके। तो चिली सॉल्ट पीटर इज एन गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। वेरी गुड बेटा, सबने सही बोला है, वेरी गुड। नाउ, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए बेटा, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे करनी है। चलो बेटा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ऑल दीज एलिमेंट हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। वी ऑल नो कि अगर ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है तो सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में? ऑल दीज एलिमेंट हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17th एलिमेंट इज NH2 NP5। ठीक है। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 7A ग्रुप एलिमेंट का, वो क्या होगा? NH2 एंड NP5। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स फॉलो ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है। यानी जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन ऑर्बिटल्स का फॉलोज ऑफ बाउ प्रिंसिपल्स। किस तरीके से? देखो, तो सबको पता है इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, देन 3p 4s 3d। तो इस सीक्वेंस को ये लोग क्या करते हैं बेटा? फॉलो करते हैं। ठीक है। दिस सीक्वेंस इज फॉलोड बाय द ग्रुप 17th एलिमेंट, राइट? तो ग्रुप 17th एलिमेंट इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 9। तो कैसे फिल करेंगे? 1:2, 2:2, 2p5, राइट? दिस 1:2 को कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे? दो इलेक्ट्रॉन 1:2 में है, दो इलेक्ट्रॉन 2:2 में है, और 2p में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। तो 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से पूरी कहानी है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं बस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने से। ठीक है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सिमिलरली इफ यू हैव अ क्लोरीन, तो क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा? लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p5। तो 3s2 और 3p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलर फॉर द ब्रोमीन। आयोडीन के लिए भी भाई 5s और 5p में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। और एस्टेटाइन का भी अगर आप करते तो सेम आता। समझ आ गया? सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने ड्रॉ करके दिखाया है।
कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसका हम क्या बोलते हैं, NH2 NP5, ठीक है। पहले के लिए 2:2p5 हो जाएगा, फिर 3:3p5 हो जाएगा, 4:4p5 हो जाएगा, 5:5p5 हो जाएगा, एंड 6:6p5 हो जाएगा। सो दीज आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हैलोजन एटम, ठीक है। चलो बताइए तो फटाफट एक, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हैलोजन एटम, क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन एटम क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए। गुड, ठीक है। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हैलोजन एटम। गुड बेटा, ठीक है। तो सबने सही बोला है, तो यही हो जाएगा हम लोग का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हैलोजन एटम, ठीक है। NH2 NP5, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बताइए। सी बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। 1:2:2:2p6 3:3p5, वेरी गुड बेटा। चलो, नाउ आप थोड़ा सा एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। सो हैलोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, है ना। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो हम सबको पता है कि एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज ऑलवेज decreases due to increase in the nuclear charge, right? So halogen have the smallest atomic radius in their respective period, right? In a group, when you move from top to bottom, atomic radius increases, but in a period, if we move from left to right in the periodic table, their atomic radius decreases, right? For example, let's see this. The size of fluorine is the smallest, and the size of chlorine is increased, and size of bromine is more than chlorine. So as we move down the group, size increases due to increase in the number of shell. However, when we move from left to right, their size is decreases. So what is the reason for increasing the size down the group? Due to increase in the number of shell. So number of shell increases. So we can say that due to increase in the number of shell, size also increases. Now, the next factor is shielding effect also increases, right? So if you move down the group, shielding effect increases. Shielding effect क्या होता है? सो ड्यू टू दिस शिल्डिंग इफेक्ट ओनली, इसी शिल्डिंग इफेक्ट के चलते ही क्या होता है, तो इस शिल्डिंग इफेक्ट के चलते बेटा कुछ ऐसा देखने को मिलता है हम लोगों को कि the attraction between the outermost shell and nucleus start decreasing. So if the shielding effect increases, then the attraction between the nucleus and outermost cell decrease, and the result of this size of the atom increases, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है। Now atomic and ionic size also increases. Similarly, if we move from left to right, their size decrease due to increase in the nuclear charge. So ions of halogen, that is anion, have a bigger radius than their corresponding parent. What they are saying? They are saying if we consider chlorine and chlorine negative, so size of chlorine negative is much more as compared to chlorine. So this is a very simple case. The size of cation is always smaller than its parent atom, and the size of anion is always bigger than its parent atom. So this thing you need to remember. Let's understand with an example. So this is in a structure of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is a structure of chlorine. So 2 electron in the first cell, 8 electron in the second cell, and the 7 electrons are present in the outermost cell. Now, when we add one extra electron, तो एक extra electron को add करो. So ये extra electron आया और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, add हो गया, right? So now due to addition of this one extra electron, their size increases. So atomic size or anionic size में we can say that anionic size is greater than the atomic size. जो anionic size होगा वो greater होगा atomic size से, ठीक है। Now अब आपके पास ये ऑप्शन है, arrange the following in the increasing order of their ionic radius. फटाफट arrange करो. How will you arrange? All of these are anionic,
ठीक है। सो अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक रेडियस फ्रॉम लेस साइज टू मोर साइज, इस तरीके से अरेंज करो। जेएनवी शिमोगा ने बोला है 2, जेएनवी वारंगल ने बोला है 1। ओके, कर देंगे डी। डी सबसे बड़ा होगा। गुड गुड गुड। ज्यादातर बच्चों ने क्या बोला है? 1। तो लेट्स सी द आंसर, फटाफट देखते हैं सबसे बड़ा साइज किसका होगा। हम्म। सो ऑप्शन टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, नॉट ए। व्हाई? बिकॉज दे आर आस्किंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा, दे आर आस्किंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। सो सबसे छोटा साइज किसका है? दैट इज फ्लोरीन। देन उससे बड़ा, दैट इज क्लोरीन। देन कम्स ब्रोमीन, and after bromine we have iodine. So option 2 is absolutely correct, not option A बेटा, ठीक है। Remember this thing, increasing order they are asking, ठीक है। चलो, now, due to which of the following reasons halogen possess the smallest atomic and ionic radii? Because they belong to 17th group, because they are placed to the extreme left to the modern periodic table, because the effective nuclear charge experienced by the valence electron in halogen atom is maximum, या none of these। सो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर, जल्दी बताओ। जेएनवी वेस्ट गोदावरी क्या बोल रहे हैं? सी। ओके, जेएनवी वारंगल सी बोल रहे हैं, वेरी गुड। सिमोगा ने भी सी बोला है, गुड। So, why halogens are smallest in size? So, we already studied this thing, right? As we move from left to right, nuclear charge increases. ठीक है? That is the effective nuclear charge increases as we move from left to right in the periodic table. So, we can say that option C is absolutely correct, right? All other options are not valid because they belong to 17th group. This is not the correct reason. Because they are placed extreme to the left, this is also not a valid reason. So, which of the following is the valid reason? That is because the effective nuclear charge experienced by the valence electron in halogen atom is maximum. ठीक है, चल। Now, the next question is down the group atomic radius. So down the group होने पे atomic radius पे क्या फर्क पड़ता है? So down the group atomic radius decreases, increases, remains same, both B and C. Right. So down the group they are asking. So as we move down the group, atomic radius क्या होता है? Obviously, that is increases. Simple question. Now, let's see ionization enthalpy of group 17th elements। ठीक है, तो इनका ionization enthalpy देखते हैं। So 17th group element have little tendency to lose electron, right? Because they have a highly tendency to accept electron since they are very electronegative in nature. So we can say that 17th group element have a very little tendency to lose electron. Thus they have very high ionization enthalpy. We all know now what is ionization enthalpy. That is the amount of energy required to remove an electron. So their ionization enthalpy is very high. Why? Because they do not have any tendency to lose electron, right? That's why their ionization enthalpy is very, very high. Now, due to increase in the atomic size, ionization enthalpy always decrease. So as we move down the group from top to bottom, as we know, size increases. Size क्या हो रहा है? Increase हो रहा है। तो अगर size increase हो रहा है, so definitely क्या होगा यहाँ पे? तो size increase हो गया, तो definitely यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि due to increase in the size, their ionization enthalpy start decreasing। ठीक है? Now, let's understand with an example जो values दे रखे हैं। So if we have a fluorine, chlorine, bromine and iodine, so the ionization enthalpy values of fluorine is 1680 kilojoule per mole. For a chlorine, the value is decreased to 1256 kilojoule per mole.
and for bromine its value is 1142, and iodine it is 1008 kilojoule per mole. So as we clearly see that as we move down the group, due to increase in the number of shell, due to increase in the size, ionization enthalpy decreases. So maximum ionization enthalpy shown by fluorine and the minimum ionization enthalpy shown by iodine in 17th group. So this is the correct order of the ionization enthalpy of the halogen atom. Okay. Now, what is electron gain enthalpy? So electron gain enthalpy means amount of energy released or required when one extra electron added to an atom, right? So group 17 elements show highly negative electron gain enthalpy. Why? Because they have a strong tendency to accept one electron. इनकी बहुत ही strong tendency होती है एक इलेक्ट्रॉन को accept करने की. So due to this nature, they show highly negative electron gain enthalpy. So halogen have a maximum negative electron gain enthalpy corresponding to the given period. ठीक है. Now, from top to bottom, electron gain enthalpy become less negative. We measure electron gain enthalpy in more negative or less negative instead of saying decrease or increase, right? So better way to measure electron gain enthalpy is say कि as they have a strong tendency to gain electron, we are saying they have a more negative gain enthalpy. If they have a less tendency to accept pair of electron, then we can say that they having less negative gain enthalpy, or we say positive gain enthalpy. For example, noble gases. Noble gases are already stable. They have 8 electron in their valence cell, right? So we can say that noble gases have a very less tendency to accept a pair electrons, right? So however, the negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. So these are the exceptional case, right? अभी अभी क्या पढ़ा कि group 17 element have a strong tendency to accept electron. It means they show negative gain enthalpy. And down the group, they show less negative gain enthalpy. But here is one exception. In case of fluorine and chlorine, expected is कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा नेगेटिव गेन एंथैल्पी शो करेगा, राइट? दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर. बट इन एक्चुअल fluorine show less negative gain enthalpy as compared to chlorine. So why this is possible? Let's understand the reason behind this, right? Now, these are the electron gain enthalpy values. For fluorine, the value is minus 333, and for the chlorine, the value is minus 349. And same for the bromine, minus 325, for iodine, minus 296. So in the periodic table, the element with the highest electron gain enthalpy is chlorine. So chlorine जो है वो highest gain enthalpy possess कर रहा है पूरे periodic table में. So in the periodic table, the element with the highest negative gain enthalpy is no one other than chlorine. ठीक है. Now, let's see the reason behind why fluorine and chlorine. Chlorine will show more negative gain enthalpy. Why chlorine will show more negative gain enthalpy instead of fluorine? Because fluorine is the most electronegative. Since also they do not show more negative gain enthalpy. Why? देखो, if we compare the size of fluorine, so they have a 2 electrons here and 7 electrons here. Now one extra electron come and add to this shell. दे प्रोवाइड रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले से ही हैं, वो इस इनकमिंग 1 इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं, इंटर एटॉमिक रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं. ड्यू टू दिस द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस वेरी इजिली. आसानी से इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस नहीं होगा. सर प्लीज रिपीट. ओके ओके ओके, आई अगेन एक्सप्लेन दिस थिंग. आई एम सेइंग out of fluorine and chlorine, expected order of negative gain enthalpy is कि fluorine supposed to show more negative gain enthalpy than chlorine, right? Because as we know, when we move down the group, negative gain enthalpy become decrease, right? Become they are less negative tendency to show gain enthalpy. But why chlorine will show more negative gain enthalpy? This is the question. ठीक है. अभी ये पता है, डाउन द ग्रुप आओगे, नेगेटिव गेन एंथैल्पी शो करने का टेंडेंसी खत्म होना चाहिए. इसके हिसाब से तो फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव करना चाहिए था, एंड क्लोरीन सपोज टू शो लेस नेगेटिव गेन एंथैल्पी. बट इन एक्चुअल व्हाट इज हैपनिंग, chlorine show more negative gain enthalpy
as compared to fluorine. So what is the reason behind this? The reason is, in case of fluorine, in valence shell they have a 7 electron. तो फ्लोरीन में दो ही शेल होते हैं, है ना, 2,7, राइट. सो 1 इलेक्ट्रॉन जब आएगा ऐड होने उस 7 इलेक्ट्रॉन्स में, सो दीज 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड अ रिपल्शन टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बिकॉज इसका जगह क्या है, 2s, 2p5. तो ये बहुत ही स्मॉल जगह है, तो यहाँ पे जब एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा तो दे प्रोवाइड रिपल्शन. बट इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या है, थर्ड सेल भी है. तो यहाँ पे ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा तो ये इजिली ऐड हो जाएगा, बिकॉज इन थर्ड सेल वी हैव अ वैकेंट 3D ऑर्बिटल. पूरा 3D ऑर्बिटल खाली है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है. दैट्स व्हाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी इन केस ऑफ क्लोरीन एज कंपेयर टू फ्लोरीन. दैट्स व्हाई क्लोरीन शो मोर नेगेटिव गेन एंथैल्पी. नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Is this clear to everyone now? Clear? ठीक है, ओके बेटा, चल. Now, electronegativity. So in electronegativity, there is no exceptions and all this thing. It's a very simple thing. Electronegativity means tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself. That how they attract the shared pair of electron. For example, in case of HF, this bond shifted toward the fluorine and they will become F negative and H positive. What this indicate? This indicate that fluorine is more electronegative as compared to hydrogen. So electronegativity basically means tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself. अपनी तरफ attract कर लेना, right? So they have a very high electronegativity, and the electronegativity decrease down the group. Always remember, as we move from top to bottom, electronegativity decrease, and as we move from left to right, that is across the period, electronegativity increase. ठीक है. So fluorine is the most electronegative element in the periodic table. सबसे ज्यादा electronegative element कौन है? That is fluorine. Now this is the value we have for fluorine. We have a 4, chlorine 3.2, bromine 3, iodine 2.7, and prostadine, this value is 2.2. Now, what is bond dissociation enthalpy? So, bond dissociation enthalpy means amount of energy required to break the bond. And as the bond length increases, as we move down the group, bond length increases. So, as the bond length increases, bond dissociation energy decreases, right? बड़े को तोड़ना, जो साइज जिसका बड़ा है वो जल्दी टूट जाएगा एज कंपेयर टू जिसका साइज छोटा है, अगर उसको तोड़ना है तो bond dissociation enthalpy decrease down the group except for fluorine. Now, here we can say that due to a small size and high inter-electronic repulsion between the lone pair of electrons in fluorine, their bond dissociation energy is decreases. ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन वैसे तो होना चाहिए था फ्लोरीन का, बिकॉज उसका साइज छोटा है, बस ड्यू टू द स्मॉलर साइज में बहुत ज्यादा इंटर एटॉमिक रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन के चलते उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गया, वो जल्दी टूट रहा है. तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन. देन कम्स fluorine, ठीक है, bromine, sorry. The chlorine, bromine, after this we have a fluorine, and last we have a iodine. Iodine का तो कम इसलिए है because iodine का size बहुत बड़ा है. So if the bond length is increases, bond dissociation energy decreases. ठीक है, आंसर करो फटाफट. All through, electron gain enthalpy of fluorine is less negative. ठीक है, तो हमें पता है कि ऑल थ्रू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव व्हेन कंपेयर्ड टू क्लोरीन. फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन. व्हाई? व्हाई दिस इज हैपनिंग? ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव. आगे ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, इसको समझाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने किया था ये. सो इट इज, यस बेटा, इट इज ड्यू टू द लो डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल साइज में हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. नाउ दिस इज द असर्शन रीजन क्वेश्चन, सबको आंसर करना है.
In every period, halogen have high ionization enthalpy. In every period, halogen have less atomic radius. Is this correct? In every period. For example, in second period, we have chlorine, fluorine, sorry. Third period, we have a chlorine. Fourth period, we have a bromine. So in every period, halogen have a less atomic radius. Is this correct? Yes, they're saying option A. In every period, halogen have a high ionization enthalpy. In every period, halogen have a high ionization enthalpy. So, beta, R is absolutely true because in every period, halogen atom have a less atomic radius, है ना? अगर आप बात करो किसी से भी, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, again we have a bromine and we have a iodine. ठीक है, so fluorine, chlorine, bromine and iodine, so we can say that in every period they have a smallest size. अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, थर्ड पीरियड में क्लोरीन सबसे छोटा, फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन एंड फिफ्थ पीरियड में आयोडीन इज वेरी स्मॉल. सो वी कैन से दैट इन एवरी पीरियड हैलोजन हैव अ लेस एटॉमिक रेडियस, बट इन एवरी पीरियड हैलोजन हैव अ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनर्ट गैसेस की भी होती है. इनर्ट गैसेस भी है 18th ग्रुप, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है. सो वी कैन नॉट से दैट इन एवरी पीरियड हैलोजन हैव द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. Now, halogen have a maximum negative gain enthalpy in the respective period of the periodic table. Why? So, why they show the more negative gain enthalpy? See, these questions are very important to understand the whole concept, right? So, बड़ा important सारी चीजें, इसीलिए मैंने इसको consider किया है. So, this is due to the relatively small size, high effective nuclear charge of halogen compared to the other element in the respective periods. ठीक है? Why chlorine has a higher electron affinity than fluorine? अभी पढ़ा था. Due to the smaller size of an atom, incoming electron experience greater repulsion in 2p electrons of fluorine atom. ठीक है? And less repulsion in the 3p orbital. That's why they have a higher electron gain enthalpy. Why does chlorine? ये तो हमने कर ही लिया ऑलरेडी. नाउ इसका आंसर करो बेटा फटाफट जल्दी से सभी लोग, इसको आंसर करो. द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन इज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन एटम? सी, वेस्ट गोवा ने बोला है सी. दैट इज क्लोरीन, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. गुड बेटा, राइट. चलो. नाउ अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो तो फ्लोरीन जो होता है वो गैस होता है, क्लोरीन इज ऑल्सो अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड. ठीक है. नाउ या दिस इज, तो फ्लोरीन गैसेस फॉर्म में है, ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म, क्लोरीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ गैसियस फॉर्म एंड आयोडीन इज इन सॉलिड. Van der Waals forces increase down the group as the atomic size increases. Van der Waals forces also increases. Van der Waals force is directly proportional to the atomic size, right? So as the Van der Waals forces increases down the group, because atomic molecular mass is also increases. The melting and boiling point increase down the group with increase in the size. So this thing you also need to remember. Both melting and boiling point increase down the group. Now, all the halogens are colored, and this is due to the absorption of radiation in the visible region. So, जितने भी halogens होते हैं, all the halogens, so all the halogens are colored in nature. All the halogens are colored in nature. This is due to the absorption of radiation in the visible region. ठीक है? तो सभी के सभी halogens जो होते हैं वो colored होते हैं. Let's see. So, ये मान लो कोई मेरा source of light है, 4800 स्ट्रॉन्ग का वेवलेंथ है. ठीक है. तो ये जैसे ही फॉल कर रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ये मैं समझा रहा हूँ कैसे वो कलर होते हैं ये. तो जैसे ही इंसिडेंट लाइट जिसका वेवलेंथ 4800 एमस्ट्रॉन्ग है वो फॉल करता है, और इनके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं. एंड दे ट्रांसमिटेड लाइट, लाइट को क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड करते हैं, जो हम लोगों को दिखाई देता है. ठीक है. सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोगों को ये दिखाई देता है, तो कलर इसीलिए ये लोग होते हैं. ठीक है. नाउ डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा.
सो एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली टाइटली हेल्ड। और जो नीचे के तीन एलिमेंट्स हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है, उनमें क्या होगा बेटा? तो उनमें क्या हो जाएगा हम लोगों का कि दे एब्सॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटाइन हो गया, तो दे एब्सॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और वो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट। क्यों? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड होते हैं एंड दे ट्रांसमिट हाई एनर्जी। ठीक है। अब देखो, इन सबका कलर भी बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी। फ्लोरीन इज पेल येलो इन कलर, क्लोरीन इज पेल येलोइश ग्रीन। राइट। डेंसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। जो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है, सो दे रिएक्ट विथ वाटर। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्प्रिंगली soluble इन वाटर। जो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है, दे रिएक्ट विथ वाटर, बट द ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्प्रिंगली soluble इन वाटर। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर soluble मोर फ्रीली इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसमें ज्यादा होते हैं ये? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सच एज CHCl3, CCl4, CH2, ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर। तो उनके कोवलेंट नेचर के चलते ऐसा बिहेवियर ये शो करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, बट ब्रोमीन आयोडीन आर स्प्रिंगली soluble इन वाटर। ठीक है। नाउ फटाफट बताओ, द हैलोजन दैट शो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी अमंग दिस। कौन सा इसमें से सब्लिमेशन शो करेगा? सब्लिमेशन मींस डायरेक्ट सॉलिड टू गैस। कौन चेंज होता है डायरेक्ट सॉलिड टू गैस? GNB वेस्ट ने बोला है सी। नो बेटा, सी इज नॉट द करेक्ट वन। याद करो, द हैलोजन दैट शो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी, डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैस। JNB वारंगल, डी। गुड बेटा, दैट इज आयोडीन। गुड। सो आयोडीन जो होता है उसका सब्लिमेशन होता है। नाउ कलर ऑफ ब्रोमीन इज ग्रीन, कलरलेस, रेडिश ब्राउन, वॉयलेट। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोमीन? यस, गुड गुड गुड, दैट इज रेडिश ब्राउन। चलो, कलर ऑफ आयोडीन इज? यस। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। नाउ टॉप टू बॉटम डेंसिटी ऑफ द सेवेंथ ग्रुप एलिमेंट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, या नो रेगुलर ट्रेंड? आई एम आस्किंग डेंसिटी। ठीक है बेटा, गुड गुड। राइट, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ग्रुप। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, सो इसके लिए प्रिपेयर रहना है ना। ऐसे क्वेश्चंस ही हम लोगों को पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से ही प्रिपेयर रखना है हम लोगों को। नाउ आई एम लॉन्चिंग अ पोल, एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, सभी लोगों को इस पोल को फिल करना है, राइट? सो प्लीज फिल दिस पोल। यस, फास्ट, क्विकली एवरीवन, सभी लोग फिल करो फॉर्म, इस पोल को।
तो थैंक यू ऑल, है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और वहां पे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से अपना डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू।